माइंस रूल की वीडियो सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 5 हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के रूल के ओर से जो वीडियो सीरीज माइंस लेजिस्लेशन का डिफरेंट पार्ट हम लोग शुरू किए, उसमें माइंस रूल की चैप्टर 5 लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें रूल नंबर 30 to 39 ये 10 रूल आज का डिस्कशन टॉपिक है। रूल 30 क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 31 स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 32 डिसीजन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर इज फाइनल, 33 surface latrine and urinals, 34 standards of construction, 35 signboards to be displayed, 36 provision of water for washing etc, 37 underground latrines, 38 sanitation, 39 obligation of work persons. Quantity of drinking water. The quantity of drinking water to be provided in a mine or any part thereof shall be on a scale at least 2 liters for every persons employed at any one time, and such drinking water shall be readily available at conveniently accessible point during the whole of the working shift. हर एक आदमी जहाँ काम कर रहा है पर पर्सन 2 लीटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है और ये रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। Where 100 persons or more are employed either above ground or in open cast working at any one time, an inspector may by order in writing require the drinking water to be effectively cooled by mechanical or other means available. जहाँ पे 100% से ऊपर काम करते हैं वहाँ पे इंस्पेक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं ये जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर इसको कूल मैकेनिकल मेथड्स या अदर मेथड्स में इसको ठंडा करने के लिए। नो चार्ज शैल बी मेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सो सप्लाई, और ये ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई किया जाएगा उसके लिए कोई पैसा कंपनी चार्ज नहीं कर सकते हैं। Storage of drinking water. If drinking water not provided from taps connected with constant water supply system, it shall be kept cool in suitable vessels, sheltered from weather, and such vessels shall be emptied, cleaned, and refilled every day. A step shall be taken to preserve water, storage vessels, and vessels used for drinking water in a clean and hygienic condition. ड्रिंकिंग वाटर अगर टैप से प्रोवाइड नहीं किया जाता है कांस्टेंट सप्लाई से, तो ये सुटेबल वेसल्स में कूल कंडीशन में रखना है, शीतल पेयजल होना चाहिए और ये वेसल्स हर दिन रिफिल होना चाहिए, एम्प्टी करके रिफिल होना चाहिए और इसको क्लीन एंड हाइजीन कंडीशन में रखना है। If the source of drinking water is not from public water supply system, an inspector may be by order in writing require the owner, agent or manager of the mine to submit with the latest possible delay a certificate from the competent health authority or analyst as to the fitness of the water for human consumption. अगर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से ये वाटर सप्लाई नहीं होता है तो इंस्पेक्टर के लिए ओनर एजेंट मैनेजर को बोल सकते हैं ये जो पानी है ये पीने लायक है कि नहीं उसका सर्टिफिकेशन प्रोसीड करने के लिए। Decision of chief inspector is final. If any question arises as to whether water supply arrangements are satisfactory and in accordance with the requirement of section 19 and rule 30 and 31, the decision of chief inspector shall be final. अगर कोई डिस्प्यूट आता है इसमें तो चीफ इंस्पेक्टर का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा।
Surface latrine and urinals. On the surface, every mine, adequate latrine and urinal accommodation shall be provided at conveniently accessible place separately for the use of males and females employed in the mine. The scale-up latrine accommodation shall be at least one seat for every 50 males and at least one seat for every 50 female employed at one time, provided that where sanitary latrines are maintained in bathing place, the number of latrines to be provided under the rule may be include such sanitary latrines. In calculating latrines accommodation, any fraction less than 50 shall be renounced as 50. माइंस में जहाँ पे अब 50 मेल हर 50 मेल या 50 फीमेल पे एक लैट्रिन का व्यवस्था किया जाना चाहिए और फ्रैक्शन ऑफ 50 का हिसाब से काउंट होगा, मतलब 51 को 100 का हिसाब से 101 होने से 150 काउंट हो जाएगा. स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. Every latrine on the surface provided for the use of persons employed in mining shall be conform the following standard of construction. It shall be on-site approved in writing by an inspector. It shall be built of brick or suitable building material. It shall be adequately drained and properly ventilated and afforded effective protection from the weather. It shall be type approved in writing by an inspector. The floor and interior surface of wall up to height 1.25 meter shall be cement paint or otherwise so finished as to provide a smooth, impressive surface. It shall be partitioned off so as to secure privacy and shall have proper door and fastening, and where intended for the use of own sex adjoint latrine intended for the use of other sex, the approach shall be separate. Whether latrine is service type, the service chamber shall be provided within the efficient trapdoor and recaps for night shall be galvanized iron. The interior wall, ceiling, partition shall be whitewashed once at least in every 4 months, and date of such whitewashing shall be recorded in a bound in book kept in the mine for the purpose. Provided that the requirement regarding whitewashing shall not apply to those part of wall, ceiling, and partition which are laid in glazed tiles or otherwise finished so as to provide smooth polish and impressive surface, but all these parts shall be washed in suitable detergent and disinfects at least once in every 7 days. ये कंस्ट्रक्शन जो है उसका स्टैंडर्ड, ये कंस्ट्रक्शन साइट अप्रूव होना चाहिए इंस्पेक्टर के द्वारा, ब्रिक और अदर सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल्स के बना होना चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रेन वेंटिलेटेड होना चाहिए, फ्लोर वॉल हाइट 1.25 मीटर होना चाहिए और व्हाइट वॉश होना चाहिए once in 4 months. Signboards to be displayed. Where persons for both sexes are employed, there shall be displayed outside each latrine a signboard in the language understood by the majority of persons for males or for females as case may be. Each signboard shall also have the figure of a man or a woman as the case may be. इस टाइप का साइन बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे मेल या फीमेल लिखा होना चाहिए और फिगर होना चाहिए, जो लैंग्वेज ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंड करते हैं उसी लैंग्वेज में. Provision of water for washing, etc. Where a piped water supply is available,
A sufficient number of water taps conveniently accessible shall be provided in or near facilities. If pipe water supply is not available, sufficient quantity of water shall be kept stored in suitable cells near latrines. Underground latrines. If any mine more than 50% are employed underground at one time, latrines shall provide underground in a scale approved by the inspector at convenient points near the working shafts and at entrance to the district or sections of the mine. Latrine shall be a type approved in writing by the inspector. Sanitation. Every mine, all underground walking place and traveling roadways shall be kept clean and excreta, all latrines and urinals in or about mine shall kept in a clean and sanitary condition. Recipients for night soils shall be cleaned and disinfected at least one in every day. Proper arrangement shall be made on surface for disposal of night soil and urine. Such arrangement shall comply with requirements of any health authority or mine board within those jurisdiction of the mine is situated. Obligation of all persons. No person shall want only misuse or damage the latrines provided either on surface or underground. No person shall pollute the underground working of a mine with excreta. All persons employed underground shall be acquaint themselves with the sanitary arrangement provided from time to time in the section of the mine in which they have work or pass. Thank you.